वेलकम बैक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नई हुकूमत की तमाम तवज्जो गो के अंदरूनी हालात पर मरकूज़ है, मगर खारजा पॉलिसी के हवाले से भी मुख्तलिफ पेशरफ्त हो रही है। जनाब नवाज शरीफ ने अब तक एक गैर मुल्की दौरा किया है, जो चीन का दौरा है, जिसे इंतहाई कामयाब करार दिया गया है। भारत के साथ भी पेशरफ्त हुई है और जनाब नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और अफगानिस्तान के सदर जनाब हामिद करज़ई से टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई है। इसी किस्म की गुफ्तगू उनकी दुनिया के दूसरे रहनुमा अमरीकी सदर बारक ओबामा के साथ भी हुई है। इख्तिताम माह पिछले महीने के आखिर में बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन पाकिस्तान आए थे और एक मुख्तसर दौरा किया था, जिस दौरान उनकी एक तफसीली मुलाकात जनाब नवाज शरीफ से हुई थी। कल बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग पाकिस्तान पहुँचे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं से, सियासी कायदीन और हुकूमत के रहनुमाओं से बड़ी तफसीली मुलाकात की है और अब से थोड़ी देर कबल उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से भी हुई। एक अहम मुलाकात जो विलियम हेग की पाकिस्तान में हुई है वो वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान के साथ थी, जो इस पस मंज़र में बहुत अहम है, जो इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त MQM के हवाले से लंदन में हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग मौजूद हैं, से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा जनाब विलियम हेग। वेरी वार्म वेलकम टू द शो फॉरेन सेक्रेटरी एंड it's a pleasure to have you again. It's just 2 weeks ago Prime Minister David Cameron was here for a brief but almost a sudden visit, and now you have come 2 weeks after that visit. What is the pressing issue which brought Prime Minister Cameron and now you to Pakistan in such a short time? Well, thank you very much. It's very good to be on the show again. And of course, what has brought us here at this particular time is that there is a new government, that it's very important that the UK and Pakistan work closely together. We want to be able to discuss all the issues on which we can cooperate immediately with the new government of Pakistan. Of course, we're regular visitors every year. I've been on your show before. This is my 4th visit as British Foreign Secretary to Pakistan. But when there's a new government here, we particularly need to discuss our work together to improve education, which Britain contributes to in Pakistan, to help the economy of both countries, to work together on countering terrorism. These are the sorts of issues we've been discussing. But there's no one particular issue which is the focus? There isn't a single issue because, of course, the relations between the United Kingdom and Pakistan cover so many different subjects. And I've therefore been having meetings with the Interior Minister, with the National Security Advisor, with the Chief of the Army Staff, as well as with Prime Minister Nawaz Sharif. And now I'm in Lahore, meeting people here. I've met people of many different religions. I'm going to go on to have meetings with the Chief Minister of Punjab and members of the Parliament. So it's a broad relationship between the UK and Pakistan. We have to cover all the subjects. How differently new government, this new elected government, when you compare it to the previous government, which you had a long history of dealing, the principal difference you see? Well, of course, it's very important that we do not intervene in the politics of Pakistan. This is up to the people of Pakistan, who they have in government. But what is clear is 2 things. First of all, that the people of Pakistan have showed how strongly they believe in democracy, with the huge turnout in the elections. And to all of us in Britain, whether we're Conservative, Labour, Liberal, whatever we may be, we support the democratic institutions of Pakistan, and we're pleased to see those institutions working. Secondly, this new government, the government of Nawaz Sharif, of course has the opportunity that comes to a new government with a clear election victory to tackle all the subjects they have said they would tackle, and to really get quickly into working with other countries. So the difference is, I think, that they're new, they have a new mandate, they have a majority without making a coalition in Parliament, and this gives them some freedom of action to really take a lead and to sort out some of the country's problems. Where do you see freedom of action coming, your expectations, the UK's expectations? It's very obvious, visiting Pakistan regularly, that the economy is a high priority. I know energy supplies are a high priority, and I've discussed with the ministers in Pakistan how we can work together to boost trade and investment in both
directions to benefit the people of both countries. I think education is obviously a high priority. I've been meeting people involved in English language education here in Lahore, and one of Britain's biggest projects in the world to help the development of other nations is our support for education here in Pakistan. So these are high priorities, but I mentioned counter-terrorism as well, and of course relations with India and Afghanistan are key issues in foreign policy. We've been discussing those as well. Mr. Fons, I know there's so much happening bilaterally between Pakistan and Britain, but you must be aware that most Pakistanis are currently focused on the investigation in London by the Metropolitan Police against the MQM leadership over there. You have said that only the Metropolitan Police can comment upon the investigation, but you understand that the investigations and the outcome would carry serious implications for Britain's foreign policy vis-a-vis Pakistan and all. You have met the Interior Minister as well and other Pakistani leaders as well. This aspect did come into light, and what do you have to say about this current investigation, which carry foreign policy implications for Britain and for Pakistan as well? The thing that I always say about this, as you know, is indeed, as you have just said, that it is a matter for the Metropolitan Police in London. This is not something that is controlled by the government. It's not subject to any political control. We are a country based very strongly on law and the implementation of the law, and it's up to the police to investigate any accusations or allegations. So that's up to them. I can't comment any further on that. We do recognize, of course, that there's a huge amount of interest in this in Pakistan. I can see that because you and many other people ask me about it. But it's very important the police do their job one way or the other, and they do so free from political interference, media interference. It's very important to be fair to everybody concerned. But you know that recently the Newsnight and the BBC ran a story on MQM, and it raised very serious questions about the conduct of the British Foreign Office and British diplomats in Pakistan vis-a-vis MQM. And there were very serious questions raised there, and these are the same questions which are being asked by the media people in Pakistan, the journalists and analysts here. What do you have to say about those very serious questions and concerns raised in the Newsnight story about the conduct of British Foreign Office, the government of Her Majesty and the British diplomats in Pakistan vis-a-vis MQM leadership? I think the thing to say about that, or about relations with any political parties in Pakistan, is to go back to the point I was making earlier about we don't choose in any way between political parties in Pakistan. We want to see democracy succeed. We want the people of Pakistan to enjoy a stable democracy. And so we have contacts and relations with political parties across the spectrum and in all different parts of the country. But we don't pick and choose. That is up to you. It's our job to understand the country, to be in touch with people of many different persuasions, but it's not our job to do anything that favors one political party or another in Pakistan or in any foreign country. बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग हमारे साथ हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये भी पूछेंगे कि क्या बरतानिया के दफ्तर ख़ारजा ने BBC पर दबाव डाला कि वो MQM के हवाले से एक तफसीली खबर अपने ऑनलाइन एडिशन पे शाया ना करे, जिससे कि मज़ीद सवालात पैदा हो सकते थे और मज़ीद सवालात होंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ुसूसी इंटरव्यू के लिए बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब विलियम हेग। Did it come into discussion when you met Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan or other officials in Pakistan, because they are equally concerned? Well, certainly ministers in Pakistan have asked about what is going on, and they understand very well exactly what we're discussing, that this is a police matter. And of course, as I say, we
understand the interest in the case in Pakistan, and that you and your viewers will be interested in it. But as with any police matter affecting anybody in the United Kingdom, it's not up to me to comment any further. The police must be able to do their work free of political interference. One last subject, Mr. Foreign Secretary. It has been reported that the Foreign Office actually convinced or pressured BBC not to run Owen Bennett-Jones' story, the larger version of the story which they ran in the Newsnight on the online edition of the BBC. And it seems to be there was some concern in the British Foreign Office that it may lead to some more embarrassing questions and more embarrassing developments. What do you have to say about that? I don't know anything about that. We're used to, whether it's the BBC or anybody else, being asked a lot of questions about a lot of different subjects, and we're used to that. We just explain what the position is, as I have been doing now, so no further comment I can make on that. What do you have to say about the next 18 months? The Western armies are leaving Afghanistan, and then this is a huge development. What are your expectations from Pakistan 2013, 2014 and years after? Well, this is a very important question that you're raising, and it's vitally important that Pakistan, the United Kingdom and many other countries work closely together on this. Of course, we want to see a stable and peaceful Afghanistan. It's very important that that also contributes to stability and peace here in Pakistan as well. I've had many discussions with leaders here in Pakistan about this. I think they are playing a very constructive role in trying to support a peace process in Afghanistan. And we want to see that peace process as well as security established in Afghanistan. So the work is continuing to make sure the Afghan national security forces are able to deal with any insurgency in the future. That's in the interest of Pakistan as well. And the work is going on the peace process. You will be familiar with the attempts to open a Taliban political office in Doha, and we've been discussing that subject as well. And that Pakistan has to play a major role in that, and post-withdrawal as well. And what are your exact expectations from Pakistan in this regard? Pakistan, of course, has a major role to play. And I think it's very important for Pakistan and Afghanistan to work closely together. This is something, again, as you probably know, that we in Britain have been trying to support. The Prime Minister our Prime Minister has had a number of meetings over the last 18 months with the leaders of Pakistan and Afghanistan in what we have called a trilateral process. We are there to help both countries work together on the border, but also, of course, we want to see better economic links so that the people of these two countries can really benefit from an improved relationship with each other. Now, it's very important that Afghanistan makes a big contribution to that, but Pakistan can often give a lead. And I'm very pleased that the leaders of Pakistan in recent times have been ready to do so. One very significant thing which Britain is doing in Pakistan is to bolster education in Pakistan, and there is a huge program going on. What can you tell us about this, how it's going and what's the future? It's going very well. It's particularly strong here in Punjab. It is supporting primary education for hundreds of thousands of young people. And I've been looking at some other work we're doing just this afternoon, where we are helping to train tens of thousands of teachers who are then better able to teach maths and science and other subjects in English, which will help to give their pupils access to the whole world of education. And in Britain, we regard this as a big contribution we can make to our friends in Pakistan. It will help the economy in the future. It will help people when they come to find jobs in the future.
and it helps the whole stability and future of the country. So we're proud of what we're doing in education. We're increasing it further. And I really appreciate all the very positive comments about this that I've heard in Pakistan over the last couple of days. After the new government, we have seen a big development vis-a-vis foreign policy toward India. And there has been, this process we see has been rejuvenated of sorts, and there have been some significant developments. How are you looking at this, and how hopeful are you about the prognosis of this development? Of course, we're hopeful about this. Mr. Nawaz Sharif has made clear statements about improving relations with India and worked at this in previous times when he was Prime Minister, as have other leaders of Pakistan in the past. This is not for the United Kingdom to decide. Of course, we want India and Pakistan to continue to improve relations over time. Again, there is an enormous potential benefit to both countries economically. The benefits that could come to jobs and businesses are enormous. So we would encourage that, but this is up to India and Pakistan to take this forward. It's not something which Britain can determine. There were certain projects launched, or they were talked about, like a huge project of solid waste management in Karachi, and there was a project where Britain was trying to help investigative tools for Pakistani law enforcement agencies. But I understand they met stumbling block in past. Any progress on this, and or maybe redoing this or renegotiating all this? There are many projects that we're looking at together. I don't have any new information for you on the particular ones that you ask about, but we have many things now that we're looking at together, and I hope that in future visits by British ministers and visits by the government of Pakistan to the United Kingdom, we will really be able to expand our economic as well as educational cooperation. This is the way forward, to expand trade and investment between our countries so that there is prosperity and that we contribute to the prosperity of the world. We would like to do much more of that in the future. Thank you so much, Foreign Secretary William Hague, for being in the show once again. कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा करप्ट माफिया का, जो पाकिस्तान के दो बड़े कौमी इदारे खा गई है, EOBI और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। दोनों बड़े कलीदी इदारे हैं और जिस तरह से इन्हें लूटा गया है, इसका अहवाल हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अब दिखाएंगे इस पे एक्शन क्या हुआ है, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता माह एक तफसीली प्रोग्राम में हमने गज़ब करप्शन की वो अजब कहानियाँ सुनाई थी जो पिछले दौर में छुपा दी गई और जिनका जिक्र नहीं हो पाया। गज़ब करप्शन की अजब कहानियों का, बहुत सी कहानियों का जिक्र हुआ था, लेकिन अब भी ऐसी कहानियाँ हैं जो सामने आ रही हैं और जो बताती हैं कि किस अंदाज से और किस तरीके से करप्ट माफिया ने कौमी इदारों को लूटा। दो अहम कहानियां जो छुपा दी गई थी, जिसका जिक्र हमने गुज़िश्ता 6 जून को अपने प्रोग्राम में किया था, उनका ताल्लुक EOBI एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से था। EOBI वो इदारा है जो दरअसल रिटायर्ड और ज़ईफ़ मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है, जिसमें इन्हीं मुलाजमीन के या इनके मुलाजम रखने वालों की जानिब से कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं और इसका बुनियादी मकसद ये है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की फलाह बहबूद के मनसूबे किए जाएँ। लगता यह है कि इसे खालिसतन सियासी बुनियाद पर चलाया गया और जी भर के लूटा गया। ऐसी कहानियां सामने आई हैं कि जिसको देख के सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। करप्शन की ये कहानियों की बुनियाद पर FIA अब मुस्तादी से काम कर रही है। हुकूमत में तब्दीली के बाद वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने इस बात को यकीनी बनाया कि FIA मुकम्मल तौर पर पेशावराना अंदाज में खिदमत सर अंजाम दे, इसके काम में किसी किस्म की अमल दखल ना हो, सियासी बुनियाद पर किसी किस्म की कोई दबाव FIA पे ना हो और उसके असरात देखने में आए, और वो असरात देखने में आए हैं। कराची में FIA ने तहकीकात की EOBI और TDAP केस की। EOBI के जो तहकीकात सामने आई है उसमें देखा यह गया है कि किस तरह से दसियों अरबों रुपए की जायदादें खरीदी गई हैं। ऐसा लगता था कि EOBI दरअसल जायदाद खरीदने का कोई इदारा बन गया है।
बिल्कुल उन तरीक़ा कार को सामने नहीं रखा गया, मुरवजा तरीक़ा कार को सामने न रखते हुए ऐसी जायदादें खरीदी गई जो मुतनाज़िया थी, जिनकी जो ओनरशिप थी वो मुतनाज़िया थी, या उन्हें उन दामों पे ख़रीदा गया जो मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा थी। एक नहीं दर्जनों ऐसी जायदादें थी जो खरीदी गई, और इसमें FIA की तहकीकात कहती है कि अरबों रुपए की किकबैक्स हुई है। 2 वफाकी वज़रा इसमें बराह रास्त मुलव्विस रहे हैं, जिनके तहत EOBI का महकमा काम करता है। लाहौर में चैटर्जी रोड पर वाक़ जायदाद 25 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 12 करोड़ रुपए थी। मेन लोअर माल रोड लाहौर पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए की जायदाद खरीदी गई। सक्खर में 12 करोड़ 9 लाख रुपए की जायदाद, मलीर कराची में 2.2 अरब रुपए की जायदाद खरीदी गई, जबकि ये मुतनाज़िया थी, इसकी ओनरशिप मुतनाज़िया थी और इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 1 अरब रुपए ज़्यादा अदा किए गए। इसी तरह से मरकज़ F7 इस्लामाबाद में 1 अरब रुपए की, ईडन हाउसिंग स्कीम लाहौर में 1 अरब रुपए की, रिवरेज हाउसिंग स्कीम लाहौर में 1.3 अरब, चकवाल तलागंग रोड पर 6 करोड़ 45 लाख, कलर कहार चकवाल में 3 करोड़ 30 लाख, माल रोड लाहौर पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए, गुलबर्ग लाहौर में 33 करोड़ 30 लाख रुपए, ईडन हाउसिंग स्कीम फैसलाबाद में 90 करोड़ रुपए, मुल्तान रोड लाहौर पे 1.3 अरब रुपए, लाहौर में 3 करोड़ 60 लाख रुपए और फिरोजपुर रोड लाहौर पर 1.15 अरब रुपए की जायदादें खरीदी गई। और ये तमाम मार्केट वैल्यू से, इसकी मार्केट जो प्राइस थी उससे ज़्यादा दी गई, और इसमें घपला हुआ है, जिसके सबूत भी इकट्ठे किए गए हैं, शवाहिदात भी इकट्ठे किए गए हैं और केसेस भी रजिस्टर किए हैं FIA ने इस सिलसिले में मुस्तैदी इसके साथ। इसके अलावा 3 और ऐसी जायदादें हैं जो कि खरीदी गई, जिनका बराह रास्त ताल्लुक DHA से है, और DHA से EOBI ने ये खरीदी है। रिंग रोड लाहौर पर वाक़ जायदाद 1.43 अरब रुपए में खरीदी गई, DHA फेज़ 1 और 2 इस्लामाबाद में 15.74 अरब रुपए में, और DHA इस्लामाबाद में 6.82 अरब रुपए में। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि ये 23 अरब रुपए वो जायदाद जो DHA को जैसे खरीदी गई है, DHA से ये रकूम वापस हासिल की जाए। दूसरी जानिब DHA का कहना यह है कि ये शफाफ तरीके से मुरवजा उसूलों के हवाले से सौदे हुए थे, और जिसके नतीजे में EOBI को अभी तक कई अरब रुपए का फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि ये जायदाद जिस मकाम पर खरीदी गई थी वहाँ पे मार्केट वैल्यूज़ भी बढ़ चुकी हैं, और EOBI को इसमें नुकसान नहीं बल्कि अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है। ये 2 हुकूमती इदारों के दरमियान माहिदा था। DHA इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ रखती है। EOBI का भी कहना यह है कि इस मामले में उसे कतई कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखना यह है कि इस हवाले से आगे पेशरफ्त क्या होती है। दूसरी जानिब इसी तरह से लूटा गया है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये वो इदारा है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में ताजरों को, एक्सपोर्टर्स को तरगीब दी जाए, मराद दी जाए, और इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा एक स्कीम जारी की जिसे 25% जिसमें फ्रेट सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो आपके सामान ले जाने का खर्चा है उसमें 25% जो है वो गवर्नमेंट आपको वापस करती है, एक्सपोर्टर्स को वापस करती है। और ये इसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी सन 2002 में मुरतब की गई थी जिसे फ्रेट सब्सिडी कहा जाता है, और ये उन मसनूआत पर होती है जिनकी सालाना बरामद $50 लाख से जायद ना हो। सब्सिडी का इतलाक उन मंडियों पर भी होता है जहां मजमूई बरामदात $1 करोड़ से कम हो। ये तो बिल्कुल सही है, और इसके लिए एक मुरवजा तरीका तजवीज़ किया गया था ताकि शफाफ और मौसर तरीके से इस बात को देखा जा सके कि सिर्फ हकदार को इसका हक मिले, जिसके जरिए फ्रेट सब्सिडी की अदायगी के मरहले में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई किरदार नहीं होता था। फ्रेट सब्सिडी के लिए बरामद कुंदगान को कराची में नेशनल बैंक की FTC ब्रांच में क्लेम दाखिल करना होता था। बैंक क्लेम की जांच पड़ताल और ऑडिट के लिए दस्तावेजात TDAP के नामजद करदा ऑडिटर्स को फराहम करता था। क्लेम दुरुस्त होने की सूरत में ऑडिटर बैंक को मज़कूरा रकम जारी करने की मंजूरी देता था, जिसके बाद बैंक मज़कूरा बरामद कुरंदा के नाम पर पे ऑर्डर जारी कर देता था। ये बड़ा एक साफ सुथरा शफाफ तरीका था जिसे अचानक पिछली दौरे हुकूमत में तब्दील कर दिया गया, और इसके साथ ही एक इस चीज़ को कतई तौर पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अफसर के हवाले कर दी गई कि वो जिसको चाहे ये फ्रेट सब्सिडी दे दे, तमाम क्लेम्स उनके पास पहुँचे और उसके बाद फ्रेट सब्सिडीज़ देनी शुरू हो गई। और इस तरह से तकरीबन 83 कंपनियों को अदायगी की गई जो कि तमाम की तमाम जाली साबित हो चुकी हैं। इस सिलसिले में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हुक्काम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि
इस तरह से तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद की जो पहली इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि अदायगी हुई है, और अब तफसीली इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि तकरीबन 7 अरब रुपए जाली कंपनियों को जाली फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जाली क्लेम में अदा किए गए। ये तहकीकात के नतीजे में बात सामने आई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और मौसर तहकीकात की है FIA ने इस सिलसिले में, और ये नतीजा है उस पेशा वराना तर्ज अमल का जो कि अपनाया जा रहा है अब FIA में नई हुकूमत के आने के बाद। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान चाहते ये हैं कि ये एक मौसर पेशा वर इदारे की हैसियत से काम करे और उसमें हर सूरत में ये सियासी अमल दखल से इसका कोई ताल्लुक ना हो। ये बहुत अहम केसेस हैं TDAP और EOBI के हवाले से। अहमियत की बात यह है कि इन केसेस के सामने के बाद अचानक कराची में FIA के वो डायरेक्टर जो इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस को सुपरवाइज कर रहे थे और जिन्होंने कि ये केसेस तैयार किए थे, उनका तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।